last time I think we were looking at fast tokenizer, right? Mhm. So when you do auto tokenizer from pre-trained and give a checkpoint, what you get by default is a fast tokenizer, uh, which is implemented in Rust instead of Python internally. So I think it makes use of multiprocessing and all those stuff. And when you use so what you get when you do that is a batch encoding object. This tokenizer is a batch encoding object, and there are many other functions on that object. So this one instance you can check if it is a fast tokenizer or slow tokenizer. Uh, Mhm. what are the tokens that it created uh, on the encoding? Like once you give a sequence, you get a tokens. You can see its list. You can see because one word can be split into multiple tokens. You can identify which word the token was part of, which sentence it was part of, and things like that. Here they've used token classification pipeline. This for to perform NER on sentences, identify named entity and relations. So in this case, if you use this for this task, close token classification, by default, it uses this model. And let's just see. ये टोकन क्लासिफिकेशन का मॉडल उसने यूज़ किया Mhm. और उसने NER में उसने स्कोर वाइज ये दे दिया. अगर वो टोकन वाइज देता है, लेकिन आपको वर्ड वाइज अगर देखना है तो यू कैन एग्रीगेट. There are multiple aggregation strategies like first, max, and average. Here they've used simple. Now the part I was a bit confused was okay, so they are dealing with it because ये सब तो उन्होंने पाइपलाइन यूज करके किया था. इसमें Mhm. पूरा मॉडल यूज हो रहा था. सिर्फ टोकनाइजर से कैसे हो रहा था वी नीड टू फाइंड आउट. So first we need to tokenize our input and pass it through the model. This is done exactly as in chapter 2. We instantiate a tokenizer and model using this. This is as expected. And यहाँ पे auto model for tokenizer की जगह पे उन्होंने pipeline यूज़ किया, right? So pipeline basically abstracts away all those things कि तुम बस task दे दो, बाकी सब वो करेगा. तो मॉडल भी ना दे दो तो वो डिफ़ॉल्ट मॉडल उठाएगा, टोकनाइजर उठाएगा, सब कुछ. But if you want to do it explicitly and you know what model you are interested in, you can do it this way. Get a tokenizer and corresponding model. And now we are only dealing with, for instance, tokenizer. We are saying uh, tokenizer and PT. So he's he's using this sort of a constructor function. Instead of doing dot tokenize and then convert to IDs, वो दोनों एक साथ करेगा. Hence you get PyTorch tensors in return. So what you get as input, what you get as input is one uh,
what you would get is input is tokenization embedding का vector size कितना है उतना नंबर इनटू कॉलम्स वो कॉलम में होगा और ये इतना नंबर ऑफ टोकन जितने होंगे उतने नंबर ऑफ रोज होंगे राइट एंड देन यू पास इट टू द मॉडल कंफ्यूज ये इसने इनपुट में क्या दिया इसका यहाँ पे अभी चालू किया था ना अपन शुरू करते क्या है व्हाट इज द कंफ्यूजन ये 1:19 और इसका शेप कैसे आया बेसिकली उसमें 19 टोकन्स 19 tokens will give you no so what I was 19 is fine what I was expecting was input like tokenizer no sorry okay I was confusing it with embedding model I was expecting this to be a vector embedding vector तो मुझे उसमें भी 9 मैं सोच रहा था but this just tokenizes model के अंदर embedding होगा that makes sense right what you will get out of this is the embedding right? This whole process no what I'll get out of is a actual token classification मतलब फिर classification head वगैरह लगा के logits मिलेगा but हाँ इस logits को मैं सॉफ्टमैक्स के थ्रू डालूंगा तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी क्लासिफिकेशन की बट या आई थिंक एम्बेडिंग शुड बी द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ मॉडल लेट्स सी होगा इसमें अंदर नहीं ये अलग है आई थिंक ये वाला चाहिए मुझे ये ओपन किया था क्या जो कर रहे थे अभी वो ये था ना पर हमने दे उसको So inputs should contain 1:19 so it will be one row vector made of 19 numerical IDs identifying each token goes to model में पहला thing I think what it should do is convert those IDs into embedding vectors and then go through models internal architecture जो भी linear model जो भी है और finally it should come out with classification with 9 columns so I'm guessing 9 NER में 9 classification classes होंगे like person organization LOC type के 9 होंगे जो उसके logits होंगे or is it a 9-dimensional vector each value being slightly different it's a classification हाँ वही logits ना तो हर एक टोकन के लिए वो बताएगा कि वो किस में फॉल कर रहा है type of
Correct. Whether it's PER or person LOC. on. So it will be a score, not necessarily between 0 and 1, because then you'll have to do softmax it. राइट पहले तो ये करके देखते हैं, ये वही आना चाहिए आंसर. बट अभी मान लो मैं सिर्फ मॉडल प्रिंट करूँ तो हाँ ये देखना, मॉडल में पहली चीज़ उसको एम्बेडिंग करनी चाहिए, जो कि इसका 1024 का साइज़ है ना. और फाइनली आउट फीचर्स उसके 9 होने चाहिए, जो कि क्लासिफिकेशन 9 के हैं. और वो कुछ तो एक देखने का तरीका था, मॉडल डॉट कॉन्फिग ऐसा कुछ था. मॉडल डॉट क्या था वो, वाह इसमें कुछ आता भी है, कॉन्फिग क्लास. कॉन्फिग क्लास नहीं था वो. हाँ how to view models classification models classes dash labels in Hugging Face. id to label, ये था id to label. config dot id to label, config dot id to label. ये था 0 to 9, right? 0 to 8, sorry. And now to just see ki how they look like. जैसे inputs में इनपुट इफ यू सी इट विल बी 1:19 और 19 वो नंबर्स होंगे, सिंपल इंटीजर नंबर आईडी सॉर्ट ऑफ. भाई अरे यार क्या ये सब हटा भाई. ये किया, मुझे इनपुट्स था ना, नाम उसका इनपुट्स था. ओके इनपुट्स था. तो ये कर लेते हैं वैसे. ये 1 क्यों किया भाई, 0 था. सही है क्या, नहीं ये ऐसा कुछ है क्या, ठीक है जैसा है वैसा ही दिखा दे भाई. ये ऐसा करने से दिखाता क्यों नहीं, ठीक है जैसे भी. बट व्हाट इट इज ये 19 होना चाहिए, राइट. और ऐसा एक है, इसलिए you have this. And then as part of outputs what you will see is for each of these 19 you will have 9 vectors. So you will have one more, ये 2 open brackets है, वहाँ पे 3 open brackets चाहिए, right? And for each one of them you will have 9 scores for each token. Then I think what you can do is basically softmax this. torch one.
लॉजिट्स फॉर अ बैच ऑफ 3 सैम्पल्स। राइट, ये आपका लॉजिट्स अगर है, लॉजिट्स एग्जाम्पल 1, सो ऑल यू हैव टू डू इज डिमेंशन 1 में, क्योंकि डिमेंशन 1 क्योंकि आपको कॉलम में उसको आउटपुट लिखना है कि आउटपुट डॉट लॉजिट लिखना है? आउटपुट डॉट लॉजिट। अब वैसे भी उसने कुछ तो किया है यहाँ पे। अच्छा, उसने तो आगे भी जाके आर्गमैक्स लिया है उसने, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं निकाली। उसने बस ये किया लग रहा है मुझे। और मुझे इसको लेना पड़ेगा। राइट, इन दिस केस देन यू डू दिस। तो उसमें से लेट्स से पहले सिर्फ 2 के देख लेते हैं। इसका भी शेप सेम आना चाहिए, राइट? फर्स्ट इसका शेप सेम आया तो मानो इसको से 0 देख लेता हूँ। सबका सम तो पहले तो 1 आना चाहिए, विच इज़ ट्रू, क्योंकि तुमने ये किया है। ये 19 क्यों आया सम भाई? इसको दिखाते हैं। ये 2 तो नहीं है भाई वो। क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, let's examine the shapes in correct way to get the desired. So the output logic shape is base size sequence, and when you apply correct each individual
ये सही, दिस कॉमा यहाँ पे जो भी डाले वो या फिर बेसिकली ये सही कि दिस यहाँ पे जो डाले वो यहाँ पे फिर कितने थे 10 19 थे तो सबका 19 में अगर 19 तो होगा नहीं 18 होगा राइट 19 में वो फटेगा ठीक है मेक सेंस इट वाज अ शेप का प्रॉब्लम बट या आई थिंक मान लो मैं पहले का देख लेता हूँ पोजीशन किया सर प्रिंट बन गया ठीक है तो पहले इसकी जो प्रोबेबिलिटी है तो पहले इसके होने की ज़ीरो है राइट 0 1 2 3 4 इसके मैं 4 करूँ 0 1 2 3 4 4 में ये इसने बस वो आर्ग मैक्स लेके इसका जो फोर्थ इंडेक्स है वो उसने प्रिंट किया है यहाँ पे बट वही उसकी एक्चुअल ये 4 इसलिए आया क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा थी या लॉजिट्स उसके ज़्यादा थे करस्पॉन्डिंगली अगर उसका मैं लॉजिट्स देखता हूँ तो लॉजिट्स लॉजिट्स निकालना तो उसका आउटपुट्स डॉट लॉजिट्स आउटपुट डॉट लॉजिट्स इसका क्या था इसका मुझे देखना है कि एक ही ये है तो एक चलेगा मान लो मैं फोर्थ देखना चाह रहा हूँ और उसके सारे ही ये देखना चाह रहा हूँ एक नहीं बोलते इसको 0 बोलते हैं और मुझे फोर्थ नहीं फिर तो मुझे थर्ड देखना था क्या एक्चुअली फोर्थ और फिफ्थ का सेम ही है वैसे 0 1 2 3 4 सो 4 5 6 7 7 तक भी 0 1 2 3 4 वाले का आना चाहिए तो 0 1 2 3 4 वाले का आना चाहिए 7 तक 8th में वो नहीं आना चाहिए 8th में आना चाहिए वापस 0 वाला तो इसमें भी 7 तक वही आना चाहिए 0 वाला ओके सो राइट तो ये क्लियर है we have a batch with 16119 token and model has 9 different labels so the output of the model has a shape of 199 like for the text classification pipeline we use softmax function to convert those logics to probabilities and we take the argmax to take predictions. Note that we can take the argmax on the logics because the softmax does not change the order. लॉजिट्स पे सॉफ्टमैक्स ना लेते हुए डायरेक्ट आर्गमैक्स लिया क्योंकि आर्गमैक्स स्कोर पे ले लो या प्रोबेबिलिटी पे ले लो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको 2 लिस्ट किया डायमेंशन -1 मतलब सेकंड पे उसने ये किया मतलब लास्ट वाले पे एंड दिस वुड हैव बीन एक्चुअली बेटर ये सब अपन ने देखा ये भी ऐसा लग रहा कि किया था हमने कुछ तो लेकिन ये लास्ट में अपन ने इस पे छोड़ा था आई थिंक
दो तीन कुछ फॉर्मेट थे और ये पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गया था, समझ में भी नहीं आता मैं क्या था। और फॉर सम रीज़न मुझे वो इम्पोर्टेंट लग भी नहीं रहा था, ग्रुप एंटिटीज ये करना है। क्विक लुक दे देते हैं या तो फिर उसको जेमिनाई में डाल के समराइज कर लेंगे। क्या बोल रहा है वो टोकनाइजर? ये होने भी पता ना, मुझे तो ये भी पढ़ने में बोर हो रहा है भाई। और एक एक्सप्लेन कर ले। ठीक है, आई थिंक conceptually what you're saying is you make tokens and then you try and because it will split many of the words and all of that. Then you assign context to those words, saying, okay, Hugging Face is actually an organization versus something hugging. And you go back to the original text and you kind of combine the tokens that you got for these individual words, hugging and face, and the categorization of that as an organization, and you make a new token which encapsulates these together, I guess. And that way you get a more accurate representation of the text versus just very very simple tokens for everything. Broadly यही हो रहा है मेरे हिसाब से.
क्या हो रहा है? तुम जो हमने ऑलरेडी देखा बेसिकली हम्म। कि तुमने पहले जो टोकन्स निकाले वो हर चीज़ के टोकन्स निकाल रहे हैं, राइट? तो नहीं, मैं हगिंग समझा, फेस में वो मैं समझा। हाँ मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे इंडिविजुअल टोकन, जहाँ पे सिल और वीएन और इसके लिए अलग अलग आई पी और बी पी आर था, अभी एंटिटी ग्रुप लेवल पे हो गया है, जो कि पहले एंटिटी ग्रुप हाँ लेवल पे नहीं था, वो एंटिटी के लेवल पे था। तो ऑल द एंटिटीज पार्ट ऑफ दैट वन कॉमन ग्रुप आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म दिस। बट लाइक ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए किया है, या एक्चुअल मॉडल कौन सा क्या चीज़ पे करता है? ये आगे जब आप पास करेंगे तब तो यही पास करेंगे ना, एक्चुअल टोकन्स ही ब्रेक होंगे, राइट? हम्म, ये एंटिटीज बस हमें दिखाने के लिए, ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि ये किसी एक का पार्ट है, या ये वाले मॉडल को तो ये नहीं जाएंगे, राइट? मॉडल के तो ब्रोकन पार्ट जाएंगे। नहीं मॉडल को सॉर्ट ऑफ कंबाइंड पार्ट्स ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स जाएंगे। आई डाउट दैट इज द केस, तो क्योंकि जब मैंने अपन ने जब ये इसका वीडियो देखा था आंद्रेस का। 19 डाले हमने। हाँ, 19 जाएगा ना 19। आगे, हम्म, राइट? ना कि 3 जाएगा, राइट? ऑफ कोर्स 19 में सारे 3 के 19 नहीं थे, बट 3 के मान लो 7 थे, हाँ राइट? ये यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे इफ यू गो एंड सी, ये वाला ये था, इफ यू जस्ट राइट दिस एज, यहाँ पे यार ये ना बहुत ही बकवास है। ये यहाँ पे बस सिल्वियन डाल देता हूँ, देन ऐसे कि इनपुट्स, ये डेफिनेटली एक तो नहीं आएगा, ये इतने सारे आए, राइट? 101 102 तो छोड़ दो, लेकिन ये सिल्वियन को 4 में ब्रेक किया, मॉडल को 4 जाएगा, ना कि ग्रुप्ड वाला एक सिल्वियन है ऐसा तो नहीं जाएगा, करेक्ट करेक्ट। राइट? तो दिस इज जस्ट टू हमें बताने के लिए कि ये है कि उसका आगे भी कुछ मतलब है। नहीं तो लिव मॉडल को जाने के बाद जो क्या रिटर्न आता है कि ये नेम एंटिटी टाइप पर्सन है, हम्म। राइट? तो मॉडल तो ये नाउ रिटर्न भी करेगा, स्कोर वगैरह ये सब हाँ रिटर्न करेगा। तो उसके बाद ये डेकोरेशन है, राइट? उसके ऊपर कि एक्चुअल वो 3 एक नाम के थे, हम्म, क्योंकि वो 11 से 12, 12 से 14, 14 से 16 कंटिन्यूस रेंज का एक था, तो और वो तीनों एक ही टाइप के थे, तो इनको क्लब करके एक बनाया गया। हम्म। तो एक बना के फाइनली वो टोकन अपडेट होता है ना, टोकन कौन सा अपडेट होगा लाइक यहाँ पे? आगे देखते हैं। what are we trying to do in this whole process? We are इन दिस trying to दिस वाज अ create, क्लासिफिकेशन। correct, हम्म। but beyond this what will we do with the tokens? We are going to सो यू गेट इन टोकन्स ऑफसेट्स करके जो भी है, राइट? ये क्या हुआ फिर? क्या ये? tokens लेके embedding vector create करेंगे, right? करेक्ट। Now if you have given sort of broken tokens instead of one token for Sylvian, हम्म। uh, then the embedding vector that you will get out of that will be like 4 different vectors for Sylvian करेक्ट। instead of one vector which represents Sylvian and is kind of directed towards the namespace. So this information, this aggregated information that Sylvian is actually a single word, it's a name, that gets passed on to whatever will create the embedding vector, not the original tokens alone. तो Or maybe this whole thing is a process of creating the embedding vector only. ओके, अभी तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा है कि अगर ये ऐसा है कि, मुझे लगा कि टोकन को सिर्फ
इसको तो देख के लग रहा है ये आउटपुट का फैक्टर है. द स्कोर फॉर द ग्रुप एंटिटी इज कैलकुलेटेड एज द मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ द इंडिविजुअल टोकन्स. राइट. दिस पोस्ट प्रोसेसिंग कन्वर्ट्स टोकन लेवल प्रेडिक्शंस इनटू कोहेरेंट एंटिटी ग्रुप्स मैचिंग द आउटपुट. इसको देख के तो मुझे लग रहा है कि दिस इज नॉट अबाउट व्हाट यू पास टू द एम्बेडिंग मॉडल, बट इसके केस में जैसे हमने ये किया, राइट, ये एग्जाम्पल पास किया, इसको टोकनाइज किया. टोकनाइज ने सिल्वियन को 4 टोकन में डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि इनपुट में आया. तुमने मॉडल को वैसे के वैसे पास किया. मॉडल में पहला चीज है एम्बेडिंग मॉडल. तो उसने सिल्वियन के 4 टोकन को 4 अलग अलग एम्बेडिंग वेक्टर्स बनाए. मॉडल ने अपने आर्किटेक्चर के थ्रू डाला. मॉडल ने अपना प्रेडिक्शंस दिया इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक्स, आउटपुट लॉजिक्स. और आउटपुट लॉजिक्स को हमने देखा कि वो सिल्वियन के चारों टोकन को 4 प्रेडिक्शंस देगा, राइट, विच इन दिस केस चारों को उसने पर्सन वाले एंटिटी ही माना था, विच इज गुड. अभी वो फाइनल जब तुम आउटपुट, मॉडल ने तो ये दिया, मॉडल का काम खत्म हो गया मेरे हिसाब से. उसके बाद क्योंकि दिस डजंट मेक सेंस फॉर द एक्चुअल यूज केस दैट यू आर सॉल्विंग, बिकॉज एस इज नॉट अ पर्सन, इल इज नॉट अ पर्सन एंड दिस टोकन. तो उसके बाद यू डू एग्रीगेशन ऑन द आउटपुट लेवल, नॉट एट द एम्बेडिंग लेवल, इज व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस. राइट. सो दिस What is the meaning of output level? ये एम्बेडिंग लेयर पे वो ग्रुप नहीं कर रहा है उसको. एम्बेडिंग को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि सिल्वियन में पूरा मिला के एक सिल्वियन है तो सिल्वियन का एम्बेडिंग वेक्टर दे दो. वो एस का ही एम्बेडिंग वेक्टर कर रहा है, वाई का वेक्टर कर रहा है, ए एल का वेक्टर कर रहा है. जैसे ये इसमें केस में 156 है, 7777 है, 2497 है. ये एग्जैक्टली इनपुट्स मॉडल को पास होगा. ओके. और मॉडल में पहली चीज जो है, मॉडल क्या है? क्लासिफिकेशन मॉडल, राइट? ये देखना, मॉडल में पहली चीज जो है वो एम्बेडिंग वेक्टर है. वो उसमें आए हुए हर एक वोकेबलरी में, वोकेबलरी इज नथिंग बट यूनिक सेट ऑफ टोकन्स. उसमें से एक टोकन उसका एस है, इसीलिए तो वो सेंटेंस ने उसको एस में ब्रेक किया, है ना. माय को तो अब जैसे माय डाला होता, माय डाला होता तो माय को तो उसने ब्रेक नहीं किया, हालांकि उसमें भी 2 शब्द थे, है ना. तो माय एक टोकन है, सिल्वियन उसका एक टोकन है. यहाँ पे एक ये रहता है उसका डिकोड या एनकोड, उससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अगर टोकन हमने दिया तो वो वापस माय देगा, और उल्टा बेसिकली माय टू 1 मायरा लिख, MYRA. हाँ, मायरा लिख. मायरा, हाँ. मायरा भी एक है. I don't know कि यहाँ पे एक गैप क्यों आ रहा है सब. ये 2-3 है ना. सो बट कमिंग टू दिस सिल्वियन, अगर मैं ये करूँगा तो 4 अलग ही उसके एम्बेडिंग वेक्टर्स बनेंगे. 4 एम्बेडिंग वेक्टर्स बने और टोटल 19 बने हैं. तो हर एक 19 टोकन का वेक्टराइजेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत होगा, जो कि फिर उसके एनकोडर मॉडल के थ्रू जाएगा बर्ड के. और फिर फाइनली वो हर एक उस मॉडल का क्लासिफिकेशन बताएगा कि ये मॉडल, ये टोकन का क्लासिफिकेशन क्या है. और फाइनली उसका रिजल्ट ऐसे आएगा. फाइनली उसका रिजल्ट ये आएगा बेसिकली कि 19 के 19 टोकन्स कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं. तो पहले 4 जीरो को पढ़ते हैं, नेक्स्ट 4 जो कि सिल्वियन है पर्सन को करते हैं. तो मॉडल के लिए तो आउटपुट डालने के बाद उसका काम खत्म हो गया, उसने यही आउटपुट दिया है, हाँ, है ना. ये जो ग्रुपिंग कर रहे हैं वो उसके बाद हम लोग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है ना. सो इफ यू सी, ये जो इनपुट टाइप पे, हालांकि व्हाट यू कैन आर्ग्यू इज ये वैसा कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट क्यों दिख रहा है. वो इनपुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऑफसेट कुछ निकाल रहे हैं उसके पहले से, बट अल्टीमेटली वो प्रेडिक्शंस पे ही काम कर रहे हैं. जो ये प्रिंट हो रहा है वो बोल रहा है कि हाँ, तुम्हारे जो भी प्रेडिक्शंस है वो
उसके थ्रू मैं जाता हूँ और फिर मैं ये जो ऑफसेट पहले जो इनपुट के टोकन से कुछ निकाल के मैंने रखा था इन्फॉर्मेशन की, बाद में काम आएगा जब प्रेडिक्शंस निकलेगा तो उसको ग्रुपिंग करने के लिए काम आएगा, वो उसने कुछ यहाँ पे निकाल के रखा है जो कि बाद में वो यहाँ पे लगा रहा है, बट वो काम प्रेडिक्शन पे ही कर रहा है. Right, so predictions would be whatever this is, right? Prediction is based on what your logics give you. So on what your logics give you, you decided to group it. क्योंकि टोकनाइजर में अगर ये बताएगा कि नहीं किन को टोकन करना है, मॉडल उससे सीखे, तब आई मीन टोकनाइजर का काम था कि मेरे बेसिक लेवल का टोकन जितना भी मैंने सीखा है उतने चंक में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. नॉट टू से कि एस से स्टार्ट होने वाला हर शब्द एस का पहले लेगा. आई डोंट थिंक दैट इज द केस दो. सो लेट्स से इफ आई से शर्ट, इसमें तो दो बने वैसे, और 14104, और ये सिल्वियन क्या था, आ गया भाई. 14104, राइट. तो 14104 तो था नहीं. एक मिनट, अपन इसको ये भी करते हैं. टोकनाइजर डॉट टोकन्स था क्या, वो क्या था, ये एक करके छोड़ देते हैं. टोकन सब एक्चुअली देखने में मजा आएगा. डॉट टोकन्स था क्या, सिर्फ इसको प्रिंट करे तो क्या होता है. टोकनाइजर डॉट टोकन में डॉट टोकन्स कैसे करते थे उसको. अच्छा, इस पे डॉट टोकन्स करते हैं. सिल्वियन में ये सब आया, और वही चीज़ अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये SHIRT होगा. तो इट्स नॉट दैट कि एस पहले है तो वो वैसे ही ब्रेक होना चाहिए. आई डोंट नो कि ऑन व्हाट बेसिस इट विल टोकनाइज.
4 ये था राइट. ठीक है, आगे चले. Yeah. वापस वो उस पे आ ही रहा है भाई, पढ़ना चाहिए. ये ऑफसेट ऑफसेट पे तो आ ही रहा है वो. मैंने उसको ग्लांस किया था. व्हाट वाज एन ऑफसेट? उसके वो कैरेक्टर्स वो सब हटा रहे ना, वो डबल हैश ये वो, तो सीधा इज गोइंग बैक टू द एग्जैक्ट द वर्ड इटसेल्फ. ओके, सो ऑफसेट इज द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ दैट वर्ड इज यूर सेइंग. करेक्ट. तो अपने केस में ये जो उसने ऑफसेट लिखा था, 12 to 14 ये हो किया था. वीडियो लगाए क्या? लेट मी नो इफ यू कैन हियर दिस. Let's have a look inside the question answering pipeline. The question answering pipeline can extract answers to questions from a given context or passage of text, like this part of the transformer repo README. It also works for very long contexts, even if the answer is at the very end, like in this example. In this video, we'll see why. The question answering pipeline follows the same steps as the other pipelines. The question and context are tokenized as a sentence pair, fed to the model, then some post-processing is applied. The tokenization and model steps should be familiar. We use the autoclass suitable for question answering. Steps should be familiar. We use the autoclass suitable for question answering instead of sequence. इसमें स्टार्ट लॉजिट्स और एंड लॉजिट्स भी है, तो उसने पोस्ट प्रोसेसिंग करके ही उसको दिया था क्या? लास्ट इज में भी Classification. But one key difference with text classification क्विक. ये दोनों फास्ट टोकनाइजर ही है क्या? एक ही मिनट.
स्पेशल पावर्स वाला देखना था मुझे। फर्स्ट टोकन इज स्पेशल पावर्स में ये तो ठीक है। मुझे ये देखना था कि आउटपुट्स में वो स्टार्ट लॉगिट्स और एंड लॉगिट्स कहाँ से आया, क्या इसने डाला या मुझे नहीं लगा था कि भाई कि ये ये बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। इनपुट ऑफसेट बेसिकली वो वर्ड्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं ऑफ ईच टोकन, द एक्चुअल टेक्स्ट वेयर इट इज कमिंग. So how to read this? What is 0, 0? So CLS start at 0 and ends at 0. Yeah, it's the zeroth element of that. And what is 0, 2? 0, 1, 2, 3. Will be basically the next word will end at this 0, 2. So 1, 4, 2, 2 and 1, 2, 7, 1 is one token, I think. Then 3 to 7 is another token. But, 1, 2, 7, 1 say 1, 3, 9, 4 पर 30. यहाँ पे फिर मैं कंफ्यूज हूँ। 0 से 0 एक टोकन है, मतलब एक ही एक टोकन है, विच इज फाइन CLS क्योंकि एक ही टोकन है। हाँ, बट देन 0 से 2 भी एक टोकन है, मतलब क्या फिर? आई थिंक 1 to 2 होना चाहिए वो, बिकॉज आगे तो देखेगा तो एवरीथिंग इज द नेक्स्ट नंबर. अलाइन या बट जैसे 11 12 है, फिर 12 14 है. I don't know. हाँ वो भी है ना वापस। Maybe space is also a token. That's why ये ऐड क्यों नहीं हो रहा भाई? हाँ तो ये उसको सही- प्रिंट करके देखते हैं ना, मतलब डू इट क्या टोकन टू वर्ड और व्हाटएवर दैट इज, वापस उसको करके देखते हैं. इनपुट डॉट क्या नाम था उसका? इनपुट डॉट टोकन्स। टोकनाइजर को एग्जांपल में डाला और फिर टोकन्स बोला। टोकनाइजर को एग्जांपल्स में डाला और टोकन्स बोला। सो दिस इज 0। टोटल तो 19 है, करेक्ट। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ एट वॉट ये क्या है फिर, इतने क्यों है ये था अभी व्हाट यू आर सेइंग कि मैं उसको नंबर्स भी डाल देता हूँ। आईडीज टू टोकन नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए था? टोकन्स टू आईडीज चाहिए था, राइट?
क्या वो तो सेम ही चीज़ है, ये बस वर्ड में था, इंग्लिश वर्ड में वो नंबर था, बट लाइक दैट डजंट चेंज इट्स पोजीशन। इनफैक्ट ये देखने में अपने को पता तो चलेगा कि क्या चल रहा है। So if you just print this, then if you print this, let's say, let's call this A, then print A, and these are English tokens. If I pass A and say give me corresponding number equivalent for them, it will be number, right? So ये तो ये था। वो ऑफसेट मैपिंग उसमें आ रहा है, देखो सेम वे नीचे 000237। हाँ, क्यों वो वही प्रिंट किया उसने, उसमें से एक्सप्लिसिटली वो यहाँ पे प्रिंट किया है। बट माई प्रॉब्लम इज कि वो मतलब आया कहाँ से। ये तो जैसे 19 ही उसका टोटल स्पेस है, ये कैरेक्टर लेवल पे जा रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, these are at the word level token, so this is going at the character level, इसलिए वो ये सही है। तो मान लेते हैं कि इसका एग्जांपल में अगर ये ले लिया तो 00 is basically it's still like the character has not started, and 02 means you are looking at the word my. if I just remove this, length of this is 58, which makes sense, right? तो ये 58 लेंथ का था, तो now what is it saying? 00 here means it is not started. हाँ. Okay, And 02 0 to means 2 my. means the first two alphabets. Then 3 to 7 is the next word. Mhm. 8 to 10 is. हाँ. 11 to 12 is S. Hmm. 12 to 14 is YL. Hmm. 14 to 16 is VA. Yeah. 16 to 18 is IN. Hmm. 19, 20, 21, ठीक है. Last would be dot. Right, and then let's say you're saying that this is a special symbol for separators or whatever. It's, again probably a CLS type thing. Then ये क्या चीज़ आई थी भाई? ये तो पहले का था। ये जो था वही था। तो वो ऑफसेट था। ओके, सो ऑफसेट इज एट द कैरेक्टर लेवल। ये बताता है इट हैज नो and it need not so it should still be 19 though, right? So if I ask you to give me the length of this and this, Yeah, it will be for every token. right? तो वो जो हर एक बंदा है, ये एक टोकन का रिप्रेजेंट, ये दूसरे का, ये तीसरे का, कि उसमें कितने कैरेक्टर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ताकि ओरिजिनल सेंटेंस में जब मैं ये करूँ तो मैं उसको ग्रुप कर सकूँ। ठीक है, सो दैट वाज व्हाट इट वाज अबाउट। तो जब प्रेडिक्शन आया, राइट, तो प्रेडिक्शंस कितने आएंगे? 9 आएंगे, है ना? So if I just print predictions, I mean 9 क्लासेस आएंगे, बट हर एक टोकन के लिए प्रेडिक्शन आएगा। 19. Right, 19 prediction, each prediction considering one of the 9 classes. Yeah. So what you get is an index and the prediction class, and this will iterate for 19 times. So you get a label. Label is that corresponding actual human readable label. तो 0 का corresponding जो भी था वो सब आएगा. If it is not O, which means it is not that
special kind of character. और इज आउटसाइड लाइक NER में जो बिलोंग नहीं करता वो सब O में है शायद. जैसे CLS और स्पेशल कैरेक्टर्स तो है ही O में, बट माई नेम इज भी शायद O में ही आ रहे. बाकी सिल्वियन विल्वियन एक्चुअल क्लासेस में कहीं ना कहीं फॉल करते हैं, तो वो ये है. तो 0 वाले O में आएंगे, तो O जो नहीं है, मतलब 4, 6 और 8 की बात कर रहे हैं अपन, उनका मैं ऑफसेट में जाके IDX निकाल रहा हूँ. हाँ, सो बिकॉज दिस वॉज ये टोकन नंबर 1 का है, ये टोकन नंबर 2 का है, ये टोकन नंबर 3 का है. तो मैं उन्हीं टोकनों की बात कर रहा हूँ जो कि 4, 6 या 8 है, राइट. तो 4 वाला जहाँ पे फॉल कर रहा है, तो 0, 1, 2, 3, 4 पे जब ये करेगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो 11 से 12 जब मैं आऊँगा, तो फॉर इंस्टेंस ये 12 है, तो 11 से 12 जब मैं आऊँगा तो वो फॉल होगा, राइट. S तो उसका स्टार्ट और एंड मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैंने उसमें लुकअप किया, और रिजल्ट में मैंने फिर स्टार्ट और एंड को यहाँ पे डाला. सो 11 और 12 यहाँ पे डाला. दैट्स हाउ आई नो कि tokens, what was tokens? Okay, tokens was that just the English wala part. Label was okay, and probabilities. What the hell was probabilities? Was that the softmax? IDXs की मुझे कौन से टोकन का देखना है. Prediction would be my label. Okay, तो probabilities वैसे कहाँ निकाला है क्या उसने? Right, so probabilities was the softmax part of it, right. कैसे देते हैं उसको ऐसे? अरे यार, सिंपल भी मेरे को पाइथन नहीं आ रहा. भाई कितना कुछ ज्ञान दे रहा है. इंडिविजुअल फैक्ट, ठीक है, रहने दे भाई, इतना ही सब बता फिर. ठीक है, इन एनी केस आई थिंक दैट प्रोबेबिलिटीज इज जस्ट टू ये दिखाने के लिए है, राइट. कि जिस टोकन का जो प्रेडिक्शन था, जैसे फर्स्ट, पे सेकंड, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है उसका ये स्कोर, राइट. वो सिल्वियन जो है वो उसमें SYLVAIN they all belong to a person, each of them. What is the probability of that? What is the score of probability? And that is Like, because what that is the confidence level the model has in the fact that this is actually a person. right, it is because they have calculated the softmax, and that is उसका shape ये था कि
उसका शेप शुड बी सेम एज द आर्गमैक्स वाला, ठीक है। नाउ इफ यू गो टू QA पाइपलाइन, नाउ इट इज व्हाट इज इट सेइंग, अभी वापस उस पे आते हैं। तो वो क्या बोल रहा था, अब तो दूसरी चीज़ ये देखनी थी कि वो क्या स्टार्ट लॉगिट उसी में है, आउटपुट ये एक दूसरे में देखना था। जैसे इसने आउटपुट कहाँ दिया, यहाँ पे आउटपुट दिया है। एक चीज़ यहाँ पे ये देखनी थी, आउटपुट्स ओवरऑल कैसे दिखता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, डॉट स्टार्ट अंडरस्कोर लॉजिक्स। मॉडल का ये आउटपुट्स था, और आउटपुट्स डॉट स्टार्ट लॉगिन्स ऐसा तो नहीं था, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज डूइंग। Is that our model outputs two tensors named start logits and end logits. Why is that? Well, this is the way the model finds the answer to the question. First, let's have a look at the model inputs. Its numbers associated with the tokenization of the question, followed by the context, with the usual CLS and SEP special tokens. The answer is part of those tokens. So we ask the model to predict which token starts the answer and which ends the answer. For two logit outputs, the theoretical labels are the pink and purple vectors. To convert those logits into probabilities, we'll need to apply a softmax, like in the text classification pipeline. We just mask the tokens that are not part of the context before doing that, leaving the initial CLS token unmasked as we use it to predict an impossible answer. This is what it looks like in terms of code. We use a large negative number for the masking, since its exponential will then be 0. Now the probability for each start and end position correspond to a possible answer. We give a score that is a product of the start probabilities and end probabilities at those positions. Of course, a start index greater than an end index corresponds to an impossible answer. Here is the code to find the best score for a possible answer. Once we have the start and end positions of the tokens, we use the offset mappings provided by our tokenizer to find the span of characters in the initial context and get our answer. Now, when the context is long, it might get truncated by the tokenizer. This might result in part of the answer, or worse, the whole answer being truncated. So we don't discard the truncated tokens, but build new features with them. Each of those features contains the question, then a chunk of text in the context. If we take these joint chunks of text, we might end up with the answer being split between two features. So instead we take overlapping chunks of text to make sure at least one of the chunks will fully contain the answer to the question. The tokenizer does all of this for us automatically with the return of the flowing tokens option. The trial argument controls the number of overlapping tokens. The result of very long context gets truncated in two features with some overlap. By applying the same post-processing we saw before for each feature, we get the answer with the best score for each of them. And we take the answer with the maximum score as a final solution. ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन क्या है वो समझ नहीं आया। क्वेश्चन तो उसके कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है और उसमें एक क्वेश्चन पूछा जिसमें आंसर छुपा हुआ है। वो देख के वो क्या कर रहा है, देखना पड़ेगा। वो बंदा जब भी बोलता है मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आता। ऑब्वियसली जनरेटेड टेक वीडियो ही है, इसलिए वो इतना नहीं, आई डोंट थिंक वो जनरेटेड है। ऑफ कोर्स क्यों बोल रहा है? वो जो बंदा बात कर रहा है वो इट्स नॉट रियल। आई थिंक ही इज रियल। द गाय मस्ट बी रियल बट द होल थिंग इज जस्ट जनरेटेड। आई डोंट थिंक सो। जनरेटेड, अगर जनरेटेड ये किया तो बहुत ही गंदा जॉब किया है फिर तो। बिकॉज वो तो पूरा मुझे जर्मन वगैरह टाइप लग रहा है जिसमें वो फ्रेंच एक्सेंट में बोलता है, बट पॉइंट इज वो रियली बोल नहीं रहा है, वो तो ऑब्वियस है। ऑब्वियस कैसे भाई, मुझे तो यही लग रहा है।
पता नहीं है. I think you don't see it as closely because you're focused on the code. नो नो आई डोंट थिंक दैट गाय, मैंने उसके वीडियो देखे भाई यूट्यूब पे हाँ दूसरे. भाई, he is a real guy. But what नहीं comes नहीं, in मैं these एक्सेंट की videos, बात कर रहा हूँ. रियल गाय तो वो ठीक है, वो तो एक बात हो गई. and accent also, हाँ everything can be mimicked, right? हाँ, but then okay okay, anyway, no point in discussing all that. Anyways. Yeah. Coming back to this, We will now dive into question answering pipeline. This is a different pipeline altogether. this is a different pipeline. मतलब इसका टोकनाइजर से कोई लेना देना नहीं है. मतलब there's no direct क्या बोलते हैं, natural progression from what we just learned to this, apart from the fact that it will also use some kind of tokenization. Yes. And what we had done, वो शायद वो स्टार्ट और एंड वाला भी काम आएगा. जो But offset- why offset is this mapping. being introduced now? I don't understand. I am just wanting to get from the text to embedding vectors, and as I see it, we still don't have that. एक मिनट यार, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या इसका आंसर में स्टार्ट लॉजिक इसलिए नहीं आया था क्योंकि इसकी मैपिंग नहीं दी थी. टोकनाइजर एग्जाम्पल, ये है बर्ट वाला, और वही चीज़ जब इसको दिया था. मुझे इसको नहीं देना होता तो क्या वो चलता, तो वो चलता है. ये मैपिंग आता है, लेकिन अगर मुझे ये चीज़ इसको देनी हो तो प्रॉब्लम है. बट ये अगर मैं नहीं देता और फिर देता, वो चल जाता है. वो किस लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं देता तो इसका टाइप है बैच एनकोडिंग, अगर मैं देता हूँ तो क्या होता है, ये तो बैच एनकोडिंग है. Anyway, ठीक है, वह इसके वाले कोलैब पे जाते हैं, क्यूए पाइपलाइन वाले पे, और विल कम टू दिस. So we'll see how to leverage the offsets to grab the answer to the question at hand from the context, a bit like we did for the grouped entities in the previous section. Right, previous section में हमने क्या किया था कि पोस्ट प्रोसेसिंग में जो लेबल ऑफ आवर इंटरेस्ट था, विच इज़ ऑफ नॉट ओ, राइट, उसका हमने ऑफसेट्स निकाले ओरिजिनल टेक्स्ट में, और फिर उससे हमने ये फाइंड आउट किया था, राइट, कि कौन सा ओरिजिनल टेक्स्ट में वो कौन सा वर्ड था. Actual characters. एक्चुअल कैरेक्टर्स थे. इसमें और इसमें क्या फ़र्क था, इसमें और इसमें बेसिकली उसने सबको, इसमें और भी कुछ और थोड़ा उसने
एंड हर टोकन को उसने एक बेसिकली ये भी दे दिया, क्लासिफिकेशन एट द एंड ऑफ इट कि दिस इज सिल्वियन का के 4 तो जो टोकन बने दे आर ऑल रिलेटेड टू एंटिटी टाइप पर्सन. राइट. वो तो बस उसने बी और आई हटा के वो निकाला और वो दिया. स्कोर को उसने सबका एवरेज दिया, और स्टार्ट और एंड को उसने आई थिंक इस वाइल लूप में उसने कुछ कुछ करके ये किया होगा. राइट. स्टार्ट लिया उसने और फिर स्टार्ट मिला उसको. एंड के लिए उसने लूप करता गया होगा जब तक उसको दूसरा ये नहीं मिला होगा. वेल वो सेम ही लेबल मिल रहा होगा उसको, ये मिला गया होगा. ठीक है, बट ये ग्रुप में किया. सो नाउ दिस गाय इज सेइंग कि तुमने लास्ट वाले में तो देखा कि जो ग्रुपिंग किया था हमने उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे. Then we will see how we can deal with very long contexts that end up being truncated. You can skip this section if you're not interested in the question answering task. Using the question answering pipeline, this is that pipeline. You have question answering as a task. Yeah, we can skip it. I don't know if it is important. Basically, it's like what I found could be इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इज, जैसे रैग में मैंने वगैरह देखा था कि ये जो स्किपिंग वाला पार्ट बोल रहा है ना, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट अगर हो, जो ट्रंकेट वाला जो पार्ट बोल रहा है, और वो जो बोल रहा है कि ओवरलैप वगैरह कुछ करूँगा मैं, वो मुझे थोड़ा ये लगा था. बट आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ ये ओवरलैप बिटवीन चंक्स, ये सेम प्रॉब्लम रैग पाइपलाइन में आता है बहुत बार. And there you do overlapping. I don't know if there's some equivalence there, but let's just move because वो है भी बहुत बड़ा टॉपिक. हर एक में इतने डेप्थ में जाएंगे तो प्रॉब्लम भी है वैसे. ठीक है. In this video, we will see together what is the normalizer component that we find at the beginning of each tokenizer. The normalization operation consists in applying a succession of normalization rules to the raw text. We choose normalization rules to remove noise in the text, which is useless for the learning and the use of our language model. Let's take a very diverse sentence with different fonts, upper and lowercase characters, accents, punctuations, and multiple spaces, to see how several tokenizers normalize it. The tokenizer from the FNet model has transformed the letter with font variants, or circled, into their basic version, and has removed the multiple spaces. And now, if we look at the normalization with Retribet tokenizer, we can see that it keeps characters with several font variants and keeps the multiple spaces, but it removes all the accents. And if we continue to test the normalization of many other tokenizers associated to models that we can find on the hub, we see that they also propose other kind of normalization. With the fast tokenizers, it's very easy to observe the normalization chosen for the currently loaded tokenizer. Indeed, each instance of a fast tokenizer has an underlying tokenizer from the Hugging Face tokenizers library stored in the backend tokenizer attribute. This object has itself a normalizer attribute that we can use thanks to the normalize string method to normalize a string. It is thus very practical that this normalization
which was used at the time of the training of the tokenizer, was saved, and that it applies automatically when you ask a trained tokenizer to tokenize the text. For example, if we hadn't included the Albert normalizer, we would have had a lot of unknown tokens by tokenizing this sentence with accents and capital letters. This transformation can also be undetectable with a simple print. Indeed, keep in mind that for a computer, text is only a succession of 0 and 1, and it happens that different successions of 0 and 1 render the same printed character. The 0 and 1 go in group of 8 to form a byte. The computer must then decode this sequence of bytes into a sequence of code points. In our example, the 2 bytes is decoded using UTF-8 into a single code point. The Unicode standard then allows us to find the character corresponding to this code point, the ccDLA. Let's repeat the same operation with this new sequence composed of 3 bytes. This time, it is transformed into 2 code points, which also correspond to the ccDLA character. It is in fact the composition of the Unicode Latin small letter c and the combining cDLA. But it's annoying because what appeared to us to be a single character, it's not at all the same thing for the computer. Fortunately, there are Unicode standardization standards known as NFC, NFD, NFKC, or NFKD that allows erasing some of these differences. These standards are often used by tokenizers. On all these previous examples, even if the normalization changed the look of the text, they did not change the content. You could still read, "Hello world, let's normalize this sentence." However, you must be aware that some normalizations can be very harmful if they are not adapted to their corpus. For example, if you take the French sentence "un père indigné," which means an indignant father, or normalize it with the Berg-based uncast tokenizer, which removes the accent. Then the sentence becomes "un père indigne," which means an unworthy father. If you watched this video to build your own tokenizer, there's no absolute rules to choose or not a normalization for a new tokenizer. But I advise you to take the time to select them so that they do not make you lose important information. Summarization करेगा. Normalization is basically taking all the characters that are coming and removing accents and removing capitals, stuff like that. So you have to be very careful which normalizer you use, because in cases of certain languages like French and all, removing the accent might change the meaning of the word, right? And it could mean a completely different word altogether. So we have to be just careful when we use a normalizer, and of course we need to normalize. Why use a normalizer? Like it removes Because all these accents and everything, but what if you don't? Because then you will get like more tokens for the same thing. Like if you write Milind with a capital M and Milind with a small m, it will give you 2 different tokens. But if you normalize it and then do it, then it will be the same token for Milind, right? Assuming you get 1 token and not like G, Li, and D as 3 different tokens. Point is, normalization is done to reduce the complexity as you go ahead, and In give some you cases, you would need Milind Yeah, you M would to be need, of course. different. And how would one differentiate that? Like
टोकनाइजर के Depending on ट्रेनिंग your में application and use case, you decide what kind of normalization you want to do. You would do it just to reduce complexity and compute going forward. If you feel that no, you shouldn't reduce, then you don't normalize. If there will be a normalization which will remove double spaces, for example. So those things you would do always. So there are thousands of normalizers, and you can apply all of them one after the other. There could be a normalizer for removing spaces. There could be a normalizer for removing capitals, accents. So we can decide which one to use, which ones to use, depending on our use case. तो वो बोल रहा है कि एक इसमें से आप देख सकते हैं करके, राइट? ये एक नॉर्मलाइजर, तो उसने ये करके दे दिया. इज व्हाट यू आर सेइंग. हेलो, हाउ आर यू? Since we pick bird and case shape and normal apply lower casing and remove accents. Pre-tokenization. इसमें क्या था pre-tokenization में? So this is what you get. बर्ट वाला किया तो लाइक यू सेइंग कि वो लोअर केस कर दिया. प्री टोकनाइजेशन में क्या किया? उसको टोकन्स में स्प्लिट किया, बट नॉट द फाइनल टोकन्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल टुडे is one word in this case, but once you go through the tokenization, But then there is it no becomes difference in PD. that case. You are saying कि ये एक सेंटेंस को बस ब्रेक किया. हाँ, उसको अरे में डाला ना, तो उसके बेसिकली प्री टोकन्स बने. प्री टोकन्स के फाइनली वो जो हमने देखे लास्ट उसमें टोकन्स बनेंगे. सो सिल्वियन would in this case Sylvan will come as one pre-token, and then it would get broken into 3 tokens. Pre-tokenization उसका अलग वीडियो था, I think. Yeah, I mean you can understand what it is basically. What we saw was the final token. So pre-tokenization would kind of take the word normalized sentence and break it into sort of pre-tokens, removing like ignoring spaces, for example, and so on and so forth. And then that would be taken into a tokenizer, finally breaking it into like a word like today, TDAY, into TD and AY, or Sylvan, as we saw in the last. Okay. So pre-tokenization is just it is not based on vocabulary. It is just based on breaking upon white spaces. Correct. That's what it looks like. I mean, we'll see the video if we want to, but नहीं, ठीक है. broadly it's fine. It's quite simplistic. White space and punctuation को split करना है basically, और कुछ नहीं. So there's no normalization needed for this. I mean, you can technically call this normalization also, but it's okay. Because I wonder क्योंकि उसने इनपुट टेक्स्ट को ही लेवल पे ही अगर उसने टोकनाइज किया है, like if we type some wrong words, wrong sentences, ChatGPTs are lenient, right? It makes sense of what we did. It does not strictly हमारे white spaces पे वो break नहीं करता, उसको समझ में आता है. तो क्या वो ChatGPTs में कुछ और भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप रहता है टू करेक्ट द ग्रामर
and all that to structure everything before it even goes through this. It's possible. It's possible that Like they for do instance, some if I kind just of write "How are normal- you" without any spaces, also then it will recognize what I'm meaning. Although there is no white space in my query to break it into tokens in the first place. Yeah. Right. So, but So they must be doing some kind of normalization, or the, the word "how are you" without any spaces um, might create some kind of embedding vector which tells the model that it is actually three different words and to treat it accordingly. I don't know. right. No, I'm saying, I- is that even AI or that's like just basic algorithm statistical ये करके वो करता होगा या वगैरह वगैरह. मतलब ये तो I गूगल don't सर्च know. भी बहुत like, पहले से we करता can- होगा. हाँ हाँ तो और गूगल उसके भी कुछ क्या AI स्टैंडर्ड तो लगा इसके. ये रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स रहेंगे जो ऐसे कॉन्कैटेनेटेड वर्ड्स को स्प्लिट करेगा and stuff like that. I'm sure that exists. नियरेस्ट नेबर कि मैंने एक आध दो स्पेलिंग मिस्टेक किया तो इट कैन फिगर आउट कि हाँ. right, that is not part of this though, right? This is assuming कि that should come. This is a very simple pre-tokenizer where you're saying कि you just remove spaces and you remove like separate out punctuations. Right. So That's it. what I'm saying है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सिंपल पे पास करने से तो वो पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है मॉडल को भेजने का. मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो उसके पहले करना पड़ेगा. सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में तो लाना पड़ेगा पहले. मतलब मैंने गलत स्पेलिंग भले ही दिया है, एक स्टेप इसके भी पहले होना चाहिए, इसके भी पहले होना चाहिए जो कि उसको करेक्ट फॉर्म में लाए. राइट. या फिर जैसे तुम कह रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन का एक और कुछ चेन होता होगा जो कि उसको हाँ. वो डिक्शनरी करेक्शन, नियरेस्ट करेक्ट स्पेलिंग में वगैरह उसको लाना वगैरह वो करना पड़ेगा. फिर then it will complete होगा. Yeah, so I mean, I would look at all of this as one this thing where you're trying to prepare the text for the tokenizer. Correct. ठीक है. Since we're using bird tokenizer, Brina again was based on white function get other tokenizers can have different rules. It will spell as well, but it will keep spaces and replace them with G symbol. Enabling it to recover the original spaces. Last example is to get a T5 tokenizer, which is a sentence-based algorithm. Hello, how are you? Like GPT token, this one keeps space and replaces them with the specific token. Only space of not punctuation. Sentence piece. एक word piece भी था ना, sentence piece tokenization algorithm for processing of text that you can use with any of the models we'll see in the next three sections. It considers a sequence of Unicode characters and replaces spaces with special character used in connection with you. It doesn't even require a pre-tokenization step, which is very useful for languages where the space character is not used, like Chinese or Japanese. Other main feature of sentence-based reversible tokenization. Since there is no special treatment of spaces, okay. Start from a small vocabulary and learns rules to merge tokens. Start from a small vocabulary and learns to merge tokens. Starts from a large vocabulary, learns to remove tokens. ठीक है. नेक्स्ट पे चले. हाँ. You are at the right place if you want to understand what the byte pair encoding subword tokenization algorithm is, how to train it,
on how the tokenization of a text is done with this algorithm. The BPE algorithm was initially proposed as a text compression algorithm, but it is also very well suited as a tokenizer for your language models. The idea of BPE is to divide words into a sequence of word units, which are units that appear frequently in a reference corpus, which is the corpus we use to train it. How is a BPE tokenizer trained? First of all, we have to get a corpus of text. We will not train our tokenizer on this raw text, but we will first normalize it, then pre-tokenize it. As the pre-tokenization divides the text into a list of words, we can represent a corpus in another way, by gathering together the same words and by maintaining a counter, here represented in blue. To understand how the training works, we consider this third corpus composed of the following words: hugging face, hugging, hug, hugger, etc. BPE is an algorithm that starts with an initial vocabulary and then increase it to the desired size. To build the initial vocabulary, we start by separating each word of the corpus into a list of elementary units that compose them. Here, the characters. We list in our vocabulary all the characters that appear and that will constitute our initial vocabulary. Let's now see how to increase it. We return to our split corpus. We will go through the words one by one and count all the occurrences of token pairs. The first pair is composed of the token H and U. The second, U and G. And we continue like this until we have the complete list. Once we know all the pairs and their frequency of appearance, we will choose the one that appears the most frequently. Here it is a pair composed of the letters L and E. We note our first merging rule, and we add the new token to our vocabulary. We can then apply this merging rule to our splits. You can see that we have merged all the pairs of tokens composed of the tokens L and E. And now, we just have to reproduce the same steps with our new splits. We calculate the frequency of occurrence of each pair of tokens. We select the pair with the highest frequency. We note it in our merge rules. We add the new token to the vocabulary. And then we merge all the pairs of tokens composed of the token L and A into our splits. And we can repeat this operation until we reach the desired vocabulary size. Here, we stopped when our vocabulary reached 21 tokens. We can see now that the words of our corpus are now divided into far fewer tokens than had at the beginning of the training, and that our algorithm has learned the radicals hug and learn, and also the verbal ending ing. Now that we have learned our vocabulary and merging rules, we can tokenize new text. For example, if we want to tokenize the word hugs, first we will divide it into elementary units, so it becomes a sequence of characters. Then we'll go through our merge rules until we have one we can apply. Here we can merge the letter H and U. On here we can merge two tokens to get the new token hug. When we get to the end of our merge rules, the tokenization is finished. And that's it.
I hope that now the BPLO algorithm has no more secret for you. ये हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, जहाँ तक मेरे को याद है। ये पहले वाला कॉर्पस उसने कैसे To build निकाला? the ये वाला लाइक तो ये हग लिया, लर्नर लिया, ये पहले टेक्स्ट में मर्जिंग इज फाइन, मर्ज होने के बाद वो उसने डिफाइन किया, दिस इज माय कॉर्पस। हाउ मेरे मेरे पास जो उसका जो कॉर्पस था, जैसे ये कॉर्पस था, इसमें तो ये सेंटेंस नहीं थे, राइट? इसको प्री टोकनाइज किया तो ये सब बना, दिस इज इट्स कॉर्पस, राइट? बट और फिर उसने बोला कि हाँ दिस 3 बार आता है, 2x इजी 1 बार आता है वगैरह, यहाँ तक सब ठीक है, राइट? ये कॉर्पस था, इस पे तुम्हें ट्रेन करना था ताकि तुम्हें टोकन्स वगैरह मर्ज बना के तुम्हारे वोकैब साइज का टोकन्स बना सके, यहाँ तक ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस गाय टू दिस, ये कैसे मूव हुआ यहाँ पे? हगिंग फेस फिर भी था, ये हग, हगर, लर्निंग, ये कहाँ से आया? हगर था क्या यहाँ पे? नहीं, बेसिकली शी सेज के तुम अज्यूम करो कि ये कॉर्पस है, जस्ट यू प्ले इट, यू विल से, शी सेज के तुम ये कॉर्पस से स्टार्ट करो, नॉट व्हाट वी आर सीइंग ऑन द So स्क्रीन you're नाउ। saying कि this is the way to build a corpus, बट आगे मैं स्लाइड में बताते हूँ कि ठीक है, मान लो कि ये 3x 2x जैसे मान लो ये कॉर्पस है, हाँ बट कॉर्पस बनाने का तरीका ये था। करेक्ट। That's what I'm confused, क्योंकि ये उसने एग्जांपल में दिया और वैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे। एक मिनट, Maintaining a counter. In another organization, divides the text into a list of words. We can represent a corpus in another way, by gathering together the same words and by maintaining a counter, here represented in blue. To understand how the training works, we consider this toy corpus composed Toy of the corpus. following words: hugging face, I thought there was a डिफाइन कर continuation. लिया, उसने डिफाइन कर लिया कि यही कॉर्पस है। ठीक है, ठीक है, I guess इसमें तो कुछ what do you see are the pros and cons of this? Pros and cons, Like in the sense Basically- what are the shortcomings of this might be कि other type of tokenizers can fill in that gap. basically if you have a large corpus, which most large language models will have, then there are certain patterns in the text which come very often. So splitting according to their frequency and merging whenever creating these merging rules makes it simpler for the tokenizer. I think instead of creating several tokens every time you see a new word, you try to merge some of them so you can reach familiar patterns. And then the merged pattern can be given its own token. Right, so this is frequency based. So you expect कि दुनिया के कॉर्पस से, ह्यूमन नॉलेज के कॉर्पस से तुमने अगर पैटर्न ढूंढ के निकाले हैं फ्रीक्वेंसी वाइज कि एक कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर कौन सा आता है, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एक दूसरे का आगे पीछे आते हैं उनको मैं कंबाइन करके एक बड़ा टोकन बनाऊँ, इंस्टेड ऑफ यू स्टार्ट विथ सिंगल कैरेक्टर बट प्रोबेबिलिस्टिक उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे के अराउंड ह्यूमन, ये तुमने उसको और थोड़ा मर्ज करके और बड़ा टोकन किया ताकि तुम्हें एक्चुअल इसमें टू ग्रैन्युलर ये ना बने, ये राइट. सो दैट्स द प्लस पार्ट इज बिकॉज यू आर लर्निंग ऑन द ह्यूमन कॉर्पस, ह्यूमन नॉलेज का कॉर्पस,
जो भी तुम्हारा एक्चुअल इन्फरेंस के टाइम पे क्वेरी आएगा वो उसी के अराउंड आएगा. सो यू एक्सपेक्ट कि वो टोकनाइजेशन एफिशिएंट होगा क्योंकि तुमने राइट साइज का टोकन्स तब तक निकाले होंगे. दैट्स द आइडिया. बट व्हाट वुड बी द कॉन, like what it might be missing, like if the merge rules are too long a list, the tokenizer might take longer time to tokenize or something of that sort. Yeah, again I think it will depend on the net size कितना करना है. Yeah, I mean, you are defining your vocab size also here, right? Like you're stopping this process at 21 tokens or whatever number you give. You could technically stop the process earlier or later and you would get a different result. Right, and what would be the pros and cons of that be? If you stop it too early, Too then you good. won't get enough. Yeah, you will still get a lot of tokens. If you stop it too late, then maybe you will take up more compute to begin with, and B, yeah, I guess I don't think there is a con in that case, but we'll have to like assume that you're doing this for a very large corpus, then the tokenization itself will take a long. बड़ा करोगे तो फिर then भी problematic. Tokenization में ही बहुत compute निकल जाए. कंप्यूट तो एक बात है बट देन वो अननेसेसरी रिलेशन समझने की कोशिश करेगा. राइट, देन इट वुड बी वेरी ओवरफिटिंग. स्पेसिफिक कुछ ढूंढने की कोशिश करेगा जो कि ज़्यादा जनरल नहीं है. जैसे इस केस में ing उसने ये किया कि हाँ वर्ब का प्रेजेंट कंटिन्यूस वगैरह उस टाइप का कुछ सीखा, बट बहुत ही कुछ और करने लगा तो कुछ स्पेसिफिक सीखने की कोशिश करेगा उसमें, विच मे नॉट बी. सो यू डोंट इवन वांट टू मच ऑफ अ मर्जिंग, आई गेस. ठीक है, आई डोंट नो इसमें और देखने की ज़रूरत है क्या कि आगे बढ़ते हैं. आई डोंट नो कि उसने, क्योंकि इसके अंदर I दूसरा don't वीडियो know नहीं if है. there's a I'm need thinking to go into the code. हाँ I don't think there's a need to go into the code. और दूसरा But वीडियो if there भी are नहीं any है, तो I don't library think मेरे साथ- functions, we can just like make note of those. Okay, by you can do this directly by saying okay, tokenize using BP. ठीक है. इसमें भी एक ही वीडियो है तो hopefully she should cover the whole topic at least in brief. Let's see together what is the training strategy of the WordPieces algorithm on how it performs the tokenization of a text once trained. WordPieces is a tokenization algorithm introduced by Google. It is used, for example, by BERT. To our knowledge, the code of WordPieces has not been open source. So we base our explanations on our own interpretation of the published literature. So what is the training strategy of WordPieces? Similarly to the BP algorithm, WordPieces starts by establishing an initial vocabulary composed of elementary units and then increases this vocabulary to the desired size. To build the initial vocabulary, we divide each word in the training corpus into the sequence of letters that make it up. As you can see, there is a small subtlety. We had two hashtags in front of the letters that do not start the word. By keeping only one occurrence per elementary unit, we now have our initial vocabulary. We will list all the existing pairs in our corpus. Once we have this list, we will calculate a score for each of these pairs. As for the BP algorithm, we will select the pair with the highest score. Taking, for example, the first pair composed of the letters H and U. The score of a pair is simply equal to the frequency of appearance of the pair divided by the product of the frequency of appearance of the first token by the frequency of appearance of the second token. Thus, at a fixed frequency of appearance of the pair, if the subparts of the pair are very frequent in the corpus, then the score will be decreased. In our example, the pair U appears 4 times,
the letter H 4 times, and the letter U 4 times. This gives us a score of 0.25. Now that we know how to calculate this score, we can do it for all pairs. We can now add to the vocabulary the pair with the highest score, after merging it, of course. And now we can apply this same fusion to our split corpus. As you can imagine, we just have to repeat the same operations until we have the vocabulary of the desired size. Let's look at a few more steps to see the evolution of our vocabulary, and also at the evolution of the length of the splits. And now that we are happy with our vocabulary, you are probably wondering how to use it to tokenize the text. Let's say we want to tokenize the word again face. Word pieces follow these rules. We will look for the longest possible token at the beginning of a word. Then, we start again on the remaining part of our word, and so on until we reach the end. And that's it. Again face is divided into 4 subtokens. This video is about to end. I hope it helped you to understand better what is behind the word pieces. Divided until we reach the end. And that's it. Again face is divided into 4 subtokens. This video is about to end. I hope it helped you to understand better what is behind the word pieces. Yes, sir. How is this different? Why is that hash in front of it? Yeah, just you're taking hash whenever it's part of the same word, and you're doing the exact same algorithm, except you are computing a score of the new merge token as the number of times the merge token appears divided by the multiplication of number of times each of the individual tokens appears. So like 4 divided by 4 into 4, that's that's what came as 0.25 in the first case for the HU token. And you keep repeating this process, you have a new score every time. And you stop at a point where you feel comfortable to stop your vocabulary building. And then it's essentially the same process as the BPE, except you have A, different tokens for words or alphabets in the same word, and B, you're computing scores and not simply frequency. How would that change? Like, How would what change? why do scores instead of frequency? What value did it add? I mean, the formula is one thing, but what value did it add? Like, intuition क्या है उसका? Also इसका भी actually कि ये same word का part है इसलिए hash है, but then कंपेयर करते हुए तो H और U को मैं कर रहा हूँ, U और G को भी कर ही रहा हूँ. हैश नहीं होता तो क्या पॉइंट ऑफ पेयर स्कोर उसके अलग होते? हैश अलग से कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है क्या? या मैं भी इस चीज में नहीं कर रहा, कहीं और कर रहा हूँ? नहीं, hash is just capturing that the fact that it was part of a longer word. Which did not play any role, at least until this in this explanation, right? Maybe it does further down the road in this tokenizer, but at least इस केस में अभी तक तो उसका कोई सेंस नहीं था, right? जितना उसने एक्सप्लेन किया, or am I not getting it right? किसका सेंस नहीं था? ये हैश, इस टोकन वर्ड पेज टोकनाइजेशन could be a lot of things. डी टोकनाइजेशन में भी इसको वो टोकनाइजर यूज करेगा जो भी होगा, बट फिलहाल उस एग्जांपल में लेडी ने सिर्फ टोकनाइजेशन एक्सप्लेन किया है. टोकनाइजेशन में उसने हैश बताया इसके सामने मैं, और उसने पूरा एग्जांपल वॉक थ्रू किया और उसने एक बताया कि वोकैबुलरी कैसे बनेगी. ये हैश नहीं होता तो भी सेम वोकैबुलरी बनती, इज माय आर्गुमेंट. नहीं बन रही है ना. बेसिकली if a word starts with H,
then there is H doesn't have a hash there, Yeah, right? right. So in vocabulary you get a H, but there's no word which has H in the middle. So then you don't get a hash H No, so at all in no, the see, vocabulary. मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना. ये Just see the vocab na in the bottom अब left. वोकेबलरी मैंने देखा यहाँ पे बीच में कहीं एच नहीं है, इसलिए कोई एच ऐसा नहीं है जिसके आगे हैश नहीं है. मैं समझ गया तेरा पॉइंट. हाँ. अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे क्या देखना है एट द एंड ऑफ द डे. पूरा वोकेबलरी बन रहा है पेयर स्कोर्स पे. पेयर क्या है? एच एंड हैश ऑफ यू. नेक्स्ट पेयर क्या है? हैश ऑफ यू, हैश ऑफ जी, हैश ऑफ जी, हैश ऑफ जी, है ना. ये सब पेयर है और ये मेरा कॉर्पस था जिसके बेसिस पे मैंने ये बिल्ड किया है, राइट? क्योंकि उसके बेसिस पे वो आगे पीछे आए हुए हैं. इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे स्कोर डाला और हाँ. स्कोर के हिसाब से वोकैब बनाया, है ना. अभी एच मान लो अंदर आता, एक एच मान लो अंदर आता, तो यहाँ पे एक हैश एच यू करके आता, राइट? तो ई के बाद मान लो यहाँ पे एक हैश हैश एच आता, तो एक पेयर यहाँ पे हैश हैश ई और हैश हैश एच का होता. करेक्ट? अभी वो भी मान लो इस पेयर ऑफ स्कोर में, मान लो कि इस कोई भी एक वर्ड में एक एच बीच में भी आता है, ऐसे मान लो इस वर्ड में आ रहा है, फेस के बाद फेस एच आता है, ऐसा एक शब्द मान लो फेस एच, तो एक एच ऐसे आता है जस्ट टू सी क्या, क्योंकि एच वहां पे नहीं था तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, ये देखने के लिए एक एग्जांपल के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए उसको भी रखते. तो मान लो हैश हैश ई और हैश हैश एच रखता तो उसका भी स्कोर आता, राइट? या एंड उसका वोकैबुलरी भी अलग होता. Like in vocabulary you will have, in vocabulary in this case you have only H, you will have H and hash hash H. Correct. Like you have hash hash F and F both in the vocabulary currently. अच्छा, यहाँ पे बोल रहे तू, ओके. हाँ. In the BPE case you would have had only F. I see. ये अलग है उसमें. vocab में भी उसका Yeah. वो initial characters अलग है which identifies position of that. Not all positions but actually only the whether it is starting position or not starting position. उतना ही identify Yes. कर रहा है, right? Yes. And pair of scores का तू क्या बोल रहा था? क्या मतलब what is the intuition behind it कि frequency versus pair of scores में? Once you start combining these, going ahead, एक सेकंड. So once you start combining these, I think you will not. I mean, it is some Fine. factor of frequency at the end of the day, Yeah. right? Because it is, frequency of pair तो है ही picture में. It is just that you multiply it by some factor. You divide by some factor. You divide by, which is frequency of first element versus frequency of second element. Anyway, I don't know. वो थोड़ा ज़्यादा मैथी हो गया है. There's probably some फंडा देयर. और कुछ फिर इसमें ये है क्या देखने लायक? यूनिग्राम भी खत्म ही कर लेते हैं फिर एक 5 मिनट में, है ना? Yeah, okay. उसका भी एक ही वीडियो है. Let's finish it. Then finally ये सबसे बड़ा है. In this video, we will study together the Unigram language model subword tokenization algorithm. The overall training strategy of a Unigram language model tokenizer is to start with a very large vocabulary and then to remove tokens at each iteration until we reach the desired size. At each iteration, we will calculate the loss on our training corpus thanks to the Unigram model. As the loss calculation depends on the available vocabulary, we can use it to choose how to reduce the vocabulary.
So we look at the evolution of the loss by removing in turn each token from the vocabulary. We will choose to remove the p%, which increase the loss the less. Before going further in the explanation of the training algorithm, I need to explain what is a unigram model. The unigram language model is a type of statistical language model. A statistical language model will assign a probability to a text considering that the text is in fact a sequence of tokens. The simplest sequence of tokens to imagine are the words that compose the sentence or the characters. The particularity of unigram language model is that it assumes that the occurrence of each word is independent of its previous word. This assumption allows us to write that the probability of a text is equal to the product of the probabilities of the tokens that compose it. It should be noted here that it is a very simple model which will not be adapted to the generation of text, since this model will always generate the same token, the one which has the greatest probability. Nevertheless, to do tokenization, this model is very useful to us because it can be used to estimate the relative likelihood of different phrases. We are now ready to return to our explanation of the training algorithm. Let's say that we have a training corpus with 10 times the word hug, 12 times the word bug, 5 times the word lug, 4 times bug, and 5 times dog. As said earlier, the training starts with a big vocabulary. Obviously, as we are using a toy corpus, this vocabulary will not be that big, but it should show you the principle. The first method is to list all the possible strict substrings, and that's what we will do here. We could also have used the BPO algorithm with a very large vocabulary size, but for now, the strict substrings are enough. The training of the unigram tokenizer is based on the expectation maximization method. At each iteration, we estimate the probabilities of the tokens of the vocabulary, and then we remove the p% of tokens that minimize the loss on the corpus, and which do not belong to the basic character, as we want to keep in our final vocabulary this basic character to be able to tokenize any word. Let's go for it. The probability of a token is simply estimated by the number of occurrences of this token in our training corpus, divided by the total number of occurrences of all the tokens. We could use this vocabulary to tokenize our words according to the unigram model. We will do it together to understand two things: how to tokenize a word with a unigram model, and how the loss is calculated on our corpus. The unigram LM tokenization of a text, hug, will be the one with the highest probability of occurrence according to our unigram model. To find it, the simplest way to proceed will be to list all the possible segmentations of our text, hug, calculate the probability of each of these segmentations, and then choose the one with the highest probability. With the current vocabulary, two tokenizations get exactly the same probability. So we choose one of them and keep in memory the associated probability. To compute the loss on our training corpus, we need to tokenize, as we just did, all the remaining words in the corpus. The loss is then the sum over all the words in the corpus of the frequency of the occurrence of the word multiplied by the opposite of the log of the probability associated with the tokenization of the word. We obtain here a loss of 170. Remember, our initial goal was to reduce the vocabulary. To do this, we will remove a token from the vocabulary and calculate the associated loss. Let's remove, for example, the token hug. We notice that the tokenization for hug with the letter H on the tuple hug is now impossible. Nevertheless,
as we saw earlier that two tokenizations had the same probability, we can still choose the remaining tokenization with a probability of 1.10 minus 2. The tokenization of the other words of the vocabulary also remain unchanged. And finally, even if we removed the token hug from our vocabulary, the loss remained equal to 170. For this first iteration, if we continue the calculation, we will notice that we could remove any token without it impacting the loss. We will therefore choose at random to remove the token hug before starting a second iteration. So we estimate again the probability of each token before calculating the impact of each token on the loss. For example, if we remove now the token composed of the letter H and U, there is only one possible tokenization left for hug. The tokenization of the other words of the vocabulary is not changed. In the end, we obtain by removing the token composed of the letter H and U from the vocabulary a loss of 168. Finally, to choose which token to remove, we will, for each remaining tokens of the vocabulary, which is not an elementary token, calculate the associated loss. Then, we will compare this loss with them. The token which we will remove is the token which impacts the least the loss. Here is the token B. We had mentioned at the beginning of the video that at each iteration we could remove 10% of the token per iteration. The second token that we could remove at this iteration is the token B. And that's it. We just have to repeat these steps until we get the vocabulary of the desired size. One last thing. In practice, when we tokenize a word with a unigram model, we don't compute the set of probabilities of all the possible splits of a word before comparing them to keep the best one. But we use the Viterbi algorithm, which is a really much more efficient way to do it. And that's it. I hope that this example has allowed you to better ठीक है, समरी दे रहा है, then we will stop. कुछ तो लॉस निकाल रही है एंड मिनिमाइज बेसिकली you start with a full vocabulary and you keep removing words from that vocabulary which will least impact the loss. Because when you remove a word from the vocabulary, it means that when you remove a token from the vocabulary, it means you have fewer ways to describe your text. So I think conceptually you keep calculating the loss at every step, and in the end she said something like some Viterbi algorithm you use to ensure that you don't need to compute for each and every pair in the word or set of tokens in the word. You can do it for fewer tokens. Right. So I don't know how important this is, but conceptually it's kind of simple to understand. Right. I think ये BPE and WordPace में we started with individual characters as the first vocab and then grew by merging, right? So Yes, yes. English ही corpus अगर मान लेते हैं हम लोग और सब small cases मान लेते हैं तो initial vocab would be 26 characters, 26 tokens, and then you Correct. grow from there by merging. Whereas with Unigram, even if we consider the same thing, that is 26 character English lowercase का corpus, you would have, let's say, an essay, Shakespeare का essay होता तो उसमें words के बहुत सारे combination, तो हर word becomes a vocab. So that can be thousands of words just constructed with 26 letters of
English, right? So then you reduce the vocab. तो पहले में you grow the vocab, दूसरे में you reduce the vocab, and the way you reduce is you find all possibilities that one particular element in that one particular token could be further broken down into smaller chunks, and consider all those possibilities, calculate की उसकी probability, and then based on that negative loss probability लेके loss निकालो, और जो loss कम करे, tie हुआ तो I think randomly कोई भी choose करो, और जो loss ये होता है उसमें से p% फिर हटा दो, right? So that is all. Again, if you look at What is the practical implication? Like, where is this used nowadays? I don't know. Does it, because it seems like it is impractical to make such a huge vocabulary to begin with and then keep reducing. But this is the training part, right? That is उसमें है. But हाँ, I think though to your point, We can just ask Gemini कि भाई ये कब यूज होता है आजकल के दुनिया में. क्या कब यूज होता है? BP, word piece and unigram? Unigram. Unigram, I don't think it is used much, but because I think it is just because it is independent of what she said. कुछ ज़्यादा ही वर्बोस नहीं हो गया आज? मैं आंसर पूछ रहा हूँ, कुछ और ही बता रहे हैं कि वो है क्या. नॉट टिपिकली यूज्ड. ठीक है. सेंटेंस पीस. सेंटेंस पीस इज कंबाइनिंग यूनिग्राम एंड BP. Handling out of vocabulary word by bringing in words into some words. ठीक है. वर्बोस बोल रहा है क्या तू इसका? नहीं, बट आई थिंक वर्बोस इज बेटर ना अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में. नहीं, but I asked the question कि is it used? You just tell me no, it is not used commonly, but a form of it is used because sentence uses that inside it, sentence piece. बस उतना ही चाहिए मुझे. It has explained what unigram tokenizer is. It has explained what BP is. Then it has said, oh, the sentence piece uses both this and that. In fact, this is one of the reason why आजकल I prefer Gemini. कि it gives me ये perplexity. मेरे को आजकल ऐसे कट रिप्लाई देता है जो कि मुझे फिर वापस फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं उसको. इसका मुझे क्या इट डिपेंड्स ऑन, और आई थिंक नहीं तो फिर प्रॉम्प्ट ही ऐसा दे दो कि मुझे कट रिप्लाई दे दो टाइप से. हाँ, of course. ये क्या बोल रहा है तू? हमें कॉलेज में पढ़ाया गया था कुछ तो BP वगैरह. BP I think was there. यार वो तो BP तुझे was पता there. होगा. I have